So hi friends, welcome to this exceptional interaction with our esteemed guest today. Today we have Ms. Swamini Taran with us, who is a Central Drug Inspector in Delhi. Welcome, Swamini. Good morning, everyone. Thank you, sir. Good morning, ma'am. Yeah, good morning. Good morning, ma'am. We also have Ms. Sonam Jain with us, who is Drug Inspector in Chhattisgarh. Welcome, Sonam. Thank you so much, sir. A very good morning to all of you. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Now, to represent our pharmacy students, we have Ms. Gavita from Kailash Institute of Pharmacy and Management, Gorakhpur. Hi, Gavita. Welcome to the show. Thank you so much, sir. And thank you, sir, first of all, for giving this opportunity. Welcome, Gavita. And we have Mr. Sohail Ahmed from Sharda University, Noida. Welcome, Sohail. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Right. And I am your host, Amit Khanna from Ahmedabad, who will be facilitating this interaction. Friends, in our first video that we have posted, where we have listened to the inspirational journey of Ms. Sonam Jain, post that, no, we received many queries. We received many queries like, what is the way forward, from where to start, the eligibility criteria, etc., etc. Now, I'm sure today's interaction is actually to answer all those queries and other such queries that we have got in those messages, right? So we are ready to go, right? So Gavita has a question for Sonam. Yes, Gavita, you can start. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, first of all, congratulations for the achievements you have accomplished. Thank you. Thank you so much. So my question is the very basic one. What is the minimum educational qualification required to appear for DI? See, the basic qualification in general is required is bachelor's in pharmacy. Like if we are talk about as per the rule that it is mentioned in the rule 49 of the drug and cosmetic rule, it's written the bachelor of pharmacy or pharmaceutical sciences. It is similar, or one who has done medicine in with specialization in clinical pharmacology or this microbiology. Basically हर स्टेट में ना बैचलर्स ऑफ फार्मेसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट किसी कहीं मतलब एक ये भी है, मतलब जब एग्जाम देते हैं ना तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि either who has done the medicine in with specialization in pharmacology or this microbiology. हुआ clear? Yes, ma'am. Thanks, Sonam. This question was actually asked by many people, that what is the minimum eligibility criteria. Acha, Sonam, I have one doubt here. Suppose there are two students appearing for the examination. One is B Pharm, another student is M Pharm, and both have cleared the DI examination, right? So is it like M Pharm is given preference over B Pharm? So it's not like that. They have their eligibility criteria once it's get fulfilled. अगर दोनों ने बी फार्म तो किया ही है, उसके बाद ही हैज डन बी फार्म, एंड इफ दे आर जब एग्जाम दोनों ने क्लियर कर लिया तो ऐसा कुछ प्रेफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कितना किसका स्कोर आया है, एंड दैट्स इट. नो, बस ये है कि मान लो अगर कुछ उसके रिलेवेंट या पैरेलल स्ट्रीम में कोई जॉब लगती है या कुछ डिपार्टमेंटल कुछ प्रमोशंस होते हैं ना, तो एम फार्म कैन गेट प्रेफरेंस, दैट्स इट. ओके सोनम, एक और क्वेश्चन था हमारे एक ऑडियंस का, मैंने मैसेजेस में देखा कि कुछ एक स्ट्रीम होता है, जैसे बी फार्म एम फार्म होता है, ऐसे एक फार्म डी करके भी स्ट्रीम होता है, राइट? तो फार्म डी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है क्या? सर एक्चुअली जैसे हर स्टेट का अलग रहता ही है, बेसिकली बी फार्म ही रहता है अधिकतर, ऐसा फार्म डी करके तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कहीं फार्म डी लिखा होगा, बट इट आई थिंक इफ इट कैन बी कंसिडरेबल, बिकॉज फार्मा मतलब वो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन इट्स अ 5 years कोर्स ना, इंटीग्रेटेड कोर्स, सो आई थिंक इट कैन बी कंसिडरेबल, बट जैसे एग्जाम में जब नोटिफिकेशन आता है तो बी फार्म ही लिखा रहता है मेजर में. Okay, so thank you Sonam for making us understand the minimum eligibility criteria.
Okay. So moving further, now Sohail has a question which many UG students want to ask and understand. Yes, Sohail. Yes, ma'am. First of all, good morning, ma'am. Good morning. Good. Ma'am, some of the government opportunities other than DI that can be explored. Yes, Sonam, you can answer this question. Some other DI opportunities. He's directly, Sohail want to jump to the opportunities. But before Other that, than Sohail, DI, you are asking. yeah, but before that, no, I guess we have moving. First, we stick to the interaction of our DI. Okay. And we will go with your question of experience of 18 months. That if you can ask to Ms. Swamini. 18 months experience, ma'am. Is it necessary? 18 months. Hello. Yeah. Yeah. I'll let you know about the experience after. So, as Sonam said, we have two things: educational qualification and experience qualification. So, as Sonam said, BPharm is the minimum basic qualification that required for DI, and what I assume for all over country. Either it's for central drugs inspectors or either it is for state drugs inspector. The BPharm is the mandatory basic qualification. Apart from that, now we talk about the experience. So as per Drugs and Cosmetics Act, and the rules are there under the act, rules are there. So in that, the qualification for the inspector is prescribed. So as per the rules, they required 18 months experience in the Schedule C. Or that Schedule C might be you people has already read about it. It covers antibiotics, basically it's parenteral preparation, antibiotics and other type of things, so that you can go through the our rules. So ultimately depends on the recruitment body. Like for central, the conducting body is different. Like for central or me, it's CDSCO, so the conduction has been done by the UPSC. Same like for state government, they have their state PSC services, so accordingly they used to uh, give the notification. So this depend on the recruitment body. In like many of the states, mostly, even we can say mostly states, MP, CG, Haryana, Punjab, UP, they don't want any type of experience. They just want basic educational qualification of B Pharma. But if we'll talk about the central drugs inspector recruitment, Maharashtra state drug inspector, so there they need experience, and that is mandatory. Likewise, in for central DI, they are requiring basic minimum 18 months experience for the testing or production manufacturing of Schedule C drug. Similarly, if we'll talk about the Maharashtra state drugs inspector, so they need at least three years, more than that. So it ultimately depends on the recruitment body, their requirement, their purpose. So accordingly, they give the notification. On that notification, they will mention what are their mandatory requirements. So if you want to anything to add in this, so you can feel free. Yes, Swamini, this question was no for many people have asked to our previous video that whether this Yes. 18 months experience is mandatory, and you rightly put it, like it depends on state to state, and like for example the central body, it totally depends on the recruiting body, right? Yes, yes. Sohail, it makes clear to you? Yes, sir. Yeah, Sohail, you can go with your next question, please. Ma'am, what is the examination pattern? Okay, And so I'll start with this question. We'll talk about first the pattern. So in general, because in mostly recruitment, either it's from state or for central, most of the time it will go with the written examination. And written examination is like MCQ, objective types question paper they give. And if we'll talk about the pattern, so as such, no fixed pattern is there for any of the recruitment body. Or we can say ultimately they are going to check our thorough knowledge about the pharmacy.
So that whole pattern will cover the pharmacy. But again, here the role of the recruitment body comes again. So depending on the recruitment rules, so they will give you the whole whatever the syllabus or whatever the subjects they are going to cover in their exam. So in most of the time nowadays, you'll well aware of that everybody should be update themselves with the current affairs, general knowledge, computers, aptitude. So these days, most of the states or central examination from 50 to 50 to, or we can say 20 to 50%, they may go. Like in central, it's 20, around 10 to 15%. They will ask about the computer knowledge, aptitude, GK, current affairs, and remaining 80 to 85%, they will talk about the pharmacy. And similarly, I appeared one time in a state exam for MP. So there I came to know they are talking about 50% for the pharmacy, and remaining 50% portion they are covering with the basic information about the state. So this is what the thing. So basically the written exam will be in an objective type and it will cover whole pharmacy. Rest is depend on your current affairs, their updation. That's it. And apart from the, I'll talk about the books. So in very briefly, I can say it will cover our whole pharmacy's basic book, where we'll get the basic things. And I would like to Sonam to add, give her experience and some details from her side. So Sonam, you can go ahead. Thank you, ma'am. As ma'am said कि जो भी बेसिक्स बुक रहती है फार्मेसी की वो तो कवर करना ही है. मतलब बेसिक जो भी है, जैसे आप जो भी रेफरेंस बुक यूज करते हो फार्माकोग्नोसी की या सुटिक्स की या मतलब previous year, last year book, like last 10 questions. What? I'm not. You're not audible. Like from last year, previous year questions, previous years. See, I have qualified in 2015 this drug inspector exam. So जैसे पैटर्न क्या होता है, जैसे फिक्स नहीं रहता है, पर मैं बुक्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. So like जैसे फार्माकोलॉजी है तो I studied KDT और एक रैंकिंग डेल होती है फार्माकोलॉजी की. वो KDT के में स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स हैं, जनरल जो था, जनरल चैप्टर्स था जिसमें कि रिसेप्टर वाला एक्शन था, कौन कौन से रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल्स है, फिर वो टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है, और मतलब जो जनरल जहां जहां हमारे रिसेप्टर्स बॉडी पे वर्क करते हैं, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पीके-पीडी प्रोफाइल. उसके बाद और अगर आप ना फार्माकोलॉजी पढ़ते हो साथ साथ में ना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, लाइक कभी कभार जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें देखना लाइक इमिडाजोल डेरिवेटिव ड्रग्स, तो उसमें हमको वो इमिडाजोल का स्ट्रक्चर भी याद हो जाता है, मतलब आप उसमें स्टार्टिंग मटेरियल भी याद कर सकते हो. तो केडीटी इज द बेस्ट आई कैन से. और अभी जो भी अपडेशन हुआ होगा, जो भी एडिशन चल रहा होगा, ऑब्वियसली यू विल स्टडी दैट. तो आप सबसे पहले तो केडीटी का जो भी ड्रग का क्लासिफिकेशन है, मतलब यू शुड लर्न इट बाय हार्ट. कोई भी पूछेगा, नींद में भी पूछेगा ना कि यार ये कौन सा ड्रग है, तो यू शुड बी रिमाइंड. तो केडीटी का स्टार्टिंग के बेसिक चैप्टर्स हो गए. इफ आई टॉक अबाउट कोग्नोसी, यू कैन गो विद द कोकाटे में जो भी टेबल्स हैं, टर्पेनॉइड्स, एल्कलॉइड, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि देखिए बहुत ऐसा नहीं, बहुत डीप में नहीं पूछते हैं, लेकिन वो बेसिक तो आपको बिल्कुल थॉरो होना चाहिए. एंड आई विल से अबाउट दिस लैकमैन टेबल्स फॉर फार्मास्यूटिक्स. लैकमैन और कोई भी रेफरेंस बुक ही, आई थिंक वन शुड गो थ्रू रेफरेंस बुक ओनली, डोंट गो थ्रू दिस स्मॉल, कोई भी बुक से नहीं. रेफरेंस बुक में सब कुछ. और मैं बोलूंगी सबको कि ना रेमिंगटन एक बार सबसे को जरूरी है सबसे, क्योंकि ना वो उसमें ना कुछ जो भी आपको डाउट है, जो भी कुछ भी लगेगा ना, तो यू विल गेट इन रेमिंगटन. कई बार ऐसी चीजें रहती हैं जो किसी बुक में नहीं मिलती है. तो जब भी आप रेमिंगटन पढ़ो तो उसको अंडरलाइन कर लो और उसमें नोट्स बना के आप उसको एक डायरी में लिखते जाओ, कुछ भी स्टार्टिंग मतलब जो भी आपको लगता है. और लैकमैन में जो टेबल्स हैं वो भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो भी आप लोग जैसे माइक्रो फिल्टर की साइज है या बैक्टीरिया है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, प्लस वो टाइप 1 टाइप 2 क्लास है, वो उससे एक क्वेश्चन आता ही है. फिर मैं बोलूंगी जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो शेड्यूल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर में कहीं का भी एग्जाम हो किसी भी स्टेट का,
तो एक ना एक शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो शेड्यूल का पूरा लिस्ट बना लो, और उसमें वो होता है फॉर्म नंबर एप्लीकेशन और लाइसेंस के लिए। तो कई बार फॉर्म 2021 से पूछ लिया कि इट इज फॉर व्हाट, शेड्यूल एक्स के लिए कौन सा लाइसेंस होता है, तो यू कैन गो इन दैट वे। और फिर मैं बताऊंगी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए सत्यनारायण करके एक बुक आती थी, हम लोग तो उसी से पढ़ते, सत्यनारायण करके। तो उसमें जो भी Yes, साइकिल ma'am. वगैरह Yes, है, Satyanarayan. हाँ सत्यनारायण है, वो पढ़ सकते हो। और माइक्रोबायोलॉजी में एक व्यासन दीक्षित करके आती थी, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वायरस का क्लासिफिकेशन था, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, मतलब जो भी बेसिक बुक है ना, उसके जो भी चैप्टर्स है स्टार्टिंग के, तो स्टेनिंग टेक्निक्स है उसमें और एक बार जो भी एग्जाम, जिस भी स्टेट का आप डीआई का फॉर्म भर रहे हो, तो वहां पे जो भी पैटर्न है वो पूछा जाता है, एक बार उसको चेक कर लो कि हाँ ये तो हर टॉपिक को वैसे ही पढ़ो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं जैसे रेमिंगटन हो गया, कोकाटे है, केडीटी है, एंड यू कैन गो थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव। हम लोग के समय आती थी पीयूष करके बुक आती थी, और इनामदार, तो हम लोग उससे एक बार देखते थे कि जो भी पैटर्न है, और उसमें क्या है ना, बेसिक बेसिक चीजें, हर टॉपिक का जिस्ट रहता था, समरी रहता था कि अगर आपको ये जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है तो 5-6 पन्नों में, अगर लास्ट रिवीजन के समय आप वो भी पढ़ सकते हो। तो आई थिंक दैट्स इट। हर सब्जेक्ट का जो भी रेफरेंस बुक है, बस उसको बस कवर कर लो। आई थिंक आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट। Yes, Sonam. So, ma'am, basically, Yeah, Garvita, please go ahead. so ma'am, when should we start the preparation? What will be like minimum requirement for the preparation? Like एक year में हो जाएगा या फिर पहले से ही preparation start करें? ये तो देखो ऐसा है, प्रिपरेशन के लिए इसमें जो भी फार्मेसी में सिलेबस में क्या है कि यू विल गेट ऑल ओवर द फार्मेसी, ठीक है। तो आप जैसे ही स्टार्ट करते हो, हम लोग का एम तो किसी का रहता नहीं है कि हमको ड्रग इंस्पेक्टर या जो भी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड ऑन द रिक्रूटमेंट और ऑन द वैकेंसी अगर निकलती है कि नहीं। तो आप, मैं तो बोलूंगी जब भी आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करते हो या कोई भी हम लोग कोई भी देते हैं एग्जाम, तो जो भी हमारे 4 साल में जो भी हमने पढ़ा है, व्हाट यू हैव स्टडीड, इट कम्स इन दैट ओनली। सो आप जब से ही आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम दो, चाहे कहीं पे भी जाओ, तो बेसिक नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इट्स नॉट लाइक आप जब स्टार्ट करोगे ना तब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब उन 4 सालों में यू हैव टू स्टडी, मतलब बाय हार्ट, नॉट के सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए होगा तो फिर आप भूल जाओगे उसको। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें आपको रिमाइंड करनी है, तो यू शुड हैव टू गो थ्रू डीपली। Thank you, ma'am. Garvita, जब जागो तब सवेरा है इसमें। या So, what I understood, Sonam, if I have to conclude is कि जैसा आप बी फार्म में पूरा 4 सेमेस्टर 4 इयर्स जो आप पढ़ाई करते हो, तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रख के चलो अपना, नंबर 1। राइट, जैसे आप केडीटी में कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका क्लासिफिकेशन बिल्कुल थॉरो कर लो, राइट। और लाइक शी सेड कि अगर जैसे स्यूटिक्स है, स्यूटिक्स में पढ़ते समय लैकमैन में इंपॉर्टेंट टेबल्स है। आई गेस हम लोगों ने कुछ 42 टेबल्स का लिस्ट बनाया था, कुछ ऐसा लिस्ट बनाया था, राइट। तो वो टेबल्स को अच्छे से याद कर लो। मैं दूंगा आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में, कभी मैं लोड करूंगा यहाँ पे वो टेबल्स की लिस्ट, तो वो टेबल्स याद कर लेना, ठीक है। फिर जैसे कोग्नोसी में हर चैप्टर से पहले कुछ एक टेबल्स दिए रहते हैं कि उसका सोर्स क्या है, और मतलब बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली वो सब रहता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो अच्छे से याद कर लो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सोनम हैज सेड कि हमेशा रेफरेंस बुक को फॉलो करो। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस कि हम छोटा सा बुक पढ़ेंगे, रात भर पढ़ेंगे और अगले दिन ड्रग इंस्पेक्टर बन जाएंगे। अगर इतना आसान होता था तो हर आदमी ड्रग इंस्पेक्टर बन गया होता था, राइट स्वामी? Yes, sir. हाँ, I want to add something. She asked when and where to start, na? So I just want to add, it's not like, especially particularly for drugs inspector, because it's not like every year it's like fixed that every year you'll get some recruitment vacancies, notifications and all. And even I'm not particularly talking about the drugs inspector, for any exam, either it's for your higher education, it's like GPAT or some other institutional exam. You have to be, because you have entered in a technical course. B Farm, it's a technical course.
So from the day one itself, you should know what is pharmacy and what exactly we are doing here, we can do in future. So if you with something, if you want to do something, you want to achieve something, it will go this mindset, and you will learn, will observe with, means you are learning, learning everything with observation, what you can do, what you can take out from it. So as Sonam said, you can cover everything and you can easily crack any exam, especially for written exam. It will cover everything. So no such like when recruitment come, then you have to prepare, because once you have started for the preparation of pharmacy exam, you started the go through the pharmacy book, so you can consider that you have already started your preparations. Thank you, ma'am. So it's like that कि आप जब आप बी फार्म कर रहे हो तो आप ऐसा ऑब्जेक्टिव लेके नहीं कर सकते कि बी फार्म के बाद में ड्रग इंस्पेक्टर ही बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे Yes, करके, sir. नहीं, क्योंकि देखो 4 years का आपका कोर्स हो गया. Yes, sir. Because And in pharmacy. yeah. Yes. Yeah, so Yes, sir. You go ahead. yeah. So like 4 years का आपका बी फार्म हो गया, फिर इसमें एज क्राइटेरिया मेरे ख्याल से 30 years का रहता है, 30 years. Yes, sir. Mostly 30 years रहता है. In Mostly most 30 of the years. states, mostly 30. मोस्टली 30 years का होता है. तो बी फार्म करते करते हमारा एज अराउंड 20-21 हो जाता है, राइट. उसके बाद आप कोई भी जॉब जो भी आप है, आप अपना पीजी कोर्स कर रहे हो या कहीं पे भी हो, यू कंटिन्यू विद दैट. एंड आपको ट्रैक वो रखना है कि डीआई का वैकेंसी किस स्टेट में कब निकल रहा है. तो आपके पास 9 years का, सबसे 7-8 साल का अपॉर्चुनिटी होता है. कहीं ना कहीं 9 साल में कहीं ना कहीं तो वैकेंसी निकलेगा ही निकलेगा, किसी ना किसी स्टेट में, सेंट्रल में, राइट. So we can take up that opportunity, right? Yeah, so we have to be ready from our day one of pharmacy. Whenever Yeah. we'll get the chance, so you can appear. बस अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है अपन को. Sohail, your network is right. I guess Sohail has some issue. Anyways, Sohail has given me one question, which is our last question for the discussion. जो उसने सबसे पहले पूछा था, what are the other government opportunities apart from the drug inspector? What are the other government opportunities that? Yes, Sohail, I am asking your question. Okay, so what are the other opportunities in the other government sector, Sonam? Yes, sir. Sir, like जो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन है उसमें जैसे ना दो वो रहती हैं, मटीरियल विजिलेंस एंड दिस फार्माकोविजिलेंस. फार्माकोविजिलेंस तो हम सबने सुना होगा, दैट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन स्टडी ऑफ द ड्रग्स. अभी एक नया आया है मटीरियल विजिलेंस, एंड दैट इज द एडवर्स एडीआर ऑफ द दिस मेडिकल डिवाइस. तो इसका भी अभी रिक्रूटमेंट होता है, मतलब डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी. एंड आई हैव टोल्ड लाइक CCRAS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, और एक होता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. तो जिसने अगर M.Pharm फार्माकोग्नोसी से किया है, वहां पे उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, द रिसर्च एसोसिएट और एनी साइंटिस्ट, वन कैन गो देयर. इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. सेकंड, आजकल ना फार्मा के बाद अगर कोई लॉ करता है तो उसमें आज कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर की बहुत जरूरत रहती है, एंड दैट इज वेरी, वो गवर्नमेंट जॉब ही उसके लिए मतलब निकलता है. लाइक NPPA में भी लॉ ऑफिसर है, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी में, और भी जैसे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे, जैसे मैं छत्तीसगढ़, वहाँ पे भी लॉ ऑफिसर की जरूरत पड़ती है. तो जो भी केसेस लॉन्च करने हैं, प्रोसिक्यूट करना है कोई भी केस हम लोगों को, तो वी नीड एनी लीगल एडवाइजर. तो वन कैन परस्यू लॉ आफ्टर दिस फार्मेसी. सेकेंड, जो भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी होती हैं. हेलो. Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. You're clear. Yeah. Yeah, ma'am. You're तो clear. या जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है जहाँ पे हम लोग ड्रग्स को भेजते हैं फॉर द सैम्पलिंग, तो हर जगह का एक सीरियल होता है. RDTL गुवाहाटी है, प्लस जो कसौली में वैक्सीन्स का है. तो यहाँ पे या हर स्टेट में ना टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है जहाँ पे सैंपल की टेस्टिंग होती है, एंड देयर दे डिक्लेयर द ड्रग इज वेदर स्प्यूरियस और मिसब्रांडेड और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, they are giving the report finally. तो
they are also, there is also an opportunity one can go like in the government analyst. हमारे उसके लिए लेकिन M.Pharm is required. So I think that's it. I think Somni ma'am can continue. Yeah, thank you, Sonam. So I'll apart whatever shared by the Sonam, I'll add a few more things into that. Sonam talked about the government analyst. I'll just give you a little more brief about this. Like drugs inspector, this is again a legal post. Similarly, for the drug testing laboratory, government analyst is also a legal post. Why I'm saying legal? Because it's defined as Drugs and Cosmetics Act. So apart from the government analyst in drug testing laboratory, either it's from state government or it's from central government. There are so many, and they have specific criteria that few labs will test for the vaccines or biological products. Some will test the diagnostic kits. Some will test our drugs. Some will test our cosmetics. Or now we'll say कि these days medical devices, in vitro diagnostic kits also covers under the regulation of Drugs and Cosmetics Act. So like being a drug inspector, we have to regulate medical device, their manufacturing, their sale, and in vitro diagnostic kits we know for this insulin, glucometer straight. So in these terms, we have broader criteria. So like apart from government analysts, there are so many like chemist, bench chemist, so many government positions are there in the laboratories. Apart from there, this is drug inspector comes under the drug regulation. So in like central, I'll let you know they are going to recruit sometime means in like 2-3 years, once in a 2-3 years, assistant drugs inspector. So this selection is done by the SSC. Staff Selection Commission conducted this ADI assistant drugs inspectors recruitment. So you can also appear in that. Sometimes they conduct for the written examination for that, or sometimes depends on your percentage marks and followed by the interview. Apart from this, we have parallel other organizations which are related to the pharmaceuticals, like Drugs Price Control Order DPCO, which regulate the essential medicine for our whole entire country. So their price regulation also comes under, or we can say this is parallel regulation other than pharmacy. Then Sonam said about the NPPA, National Pharmaceutical Pricing Authority. So all these, they are also, you will get the associate executive post. So you have to go, you should have a tracking of the government opportunity when and whenever you are come through the any notification, you just go through the details. If you are fulfilling the eligibility criteria, you just apply for that. Apart from, I can say, being being a drug inspector, before a drug inspector, I am a pharmacist. So there are a lot of pharmacist vacancies in the government sector, for the railways, for hospitals, for any institution, ESIC, any government institute. Most of the time they are having a pharmacist for their employees. So this, so lot of pharmacist options are there in the government sector. Initially might be won't get the expected that salary is low in most of the time, but it's a government, so later on you will definitely get the advantage of this. This is for the B.Pharm graduates. If you are more keen towards the higher education, or if you want to pursue higher education and then you want to enter in some government opportunity, you are looking for government opportunity. So I let you know that academics again the bestest option for you. In our country, many of the renowned or reputed institutes are there. So there you can be a part of research as well as the academic. So like NIPER, BHU, so many institutes are there. So after pursuing your post-graduation or even for PhD, you can appear for that. As Sonam talk about the legal, after if we have combo of B pharmacy and legal LLB something. So similarly, I'll let you know we have intellectually property rights. So if you have thorough knowledge of IPR, no as such no need for the degree and all in IPR.
Apart from BPharm, you just have a thorough knowledge, or there are so many courses, small term, short term courses are there for IPR. So ultimately, you have good knowledge of IPR, so you can go to the patent office, because we know in our drugs are very important part in chemistry or synthesis we are going through. So this for every patent and registration is playing very important role in our pharmaceutical field also. Even in one interaction, I came to know that now people are doing patent in pharmacology, like molecular pathway, molecular biology, receptor drug interaction. So in that way also there are huge scope for this. This is the thing related to the pharmacy academics. Some other government institutes are there. We are well aware about the CDRI. Then apart from CDRI, there are DBT, Department of Biotechnology, DST, Department of Science and Technology, then this CCMB, Central Cell Molecular Biology, IICT. So these are also, means they are not exclusively for pharmacy persons, but they have a lot of opportunity for the pharmacy, because we are the technical people. We are linking the medicines, we are linking the microbiology, we are linking the pharmacology, even we have some knowledge of technology also. So if you have good educational background, like you have a B Pharma, or sometime you have pursued master's, PhD followed by PhD, so definitely for the scientist post, you'll get the very good opportunity in department. These such a department, these are very well organized government under the other ministry, like Ministry of Science and Technology, Ministry of Department of Biotechnology. So these are a very renowned organization. You'll get very good opportunity here there. But important thing is that you have to keep your eyes on when and what requirement or notifications are coming for the vacancies. If you want to add something, or sir, so you can. Somni, thanks. It was a very thorough, explanation. I mean, I have never gone through. It is very thorough and detailed, starting from the government to the, academics, to the DST and DBTs and the research institutions. Excellent. Along with this, I once appeared for this thing. Went for a small training in INMAS, DRDO, INMAS. So yeah, there they also hire people from pharmacies. There's INMAS. It's a DRDO institution. So a lot of government opportunities are Sir, there. yeah, you talk about, sir, excuse me, you talk about the DRDO. So I'll just add one more thing. So I'm just sharing for, especially for the girls candidates. So if we go through the DST and DRDO, sometimes they conduct some exclusively training program for the women's candidate only. Like once I have appeared or the Kiran IPR, so they are conducting 11 months training program, and that is for exclusively for the female candidates. So means if we'll look about this thing now, ki if somebody having they have completed B Pharma, immediately they are not having any other chances, though so they can join this IPR training program. That is also very good. You will get the with a stipend. This training program is with a stipend, so you will learn, you will earn, and obviously you are exploring yourself for the other opportunities. Great, great, great. So now while our discussion is going on, I am getting few more responses from our audience. Many of them want to know, ma'am, is drug inspector a pressurized job? How much pressure you guys feel, Sonam? Is drug inspector a pressurized sort of something? Sir, actually, I told in my last interview also that every job, whether it's any job, every job has some pros and cons. No, if we are getting any advantage or disadvantage both, as such कोई pressure, it depends. Political चीजें होती हैं जब आप कोई कार्रवाई करने जाते हो, maybe कि अरे यहाँ से हट जाओ, ये ऐसा मत करो, वो डिपेंड्स. वैसे बहुत ज्यादा आपके अगर सीनियर्स और अगर डिपार्टमेंट सपोर्टिव है तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो.
It depend on the state or the way the area you are doing the job. जो बहुत ही ज्यादा वैसे बैकवर्ड एरिया है, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को. बट अगर आपका डिपार्टमेंट सपोर्टिव है और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी पुलिस डिपार्टमेंट, तो वन कैन गो. इट्स नॉट लाइक कि, और हर जॉब में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम रहती ही है. इट्स नॉट लाइक एनी ऐसा प्रेशर. अगर आप उसको एंजॉय करोगे ना, लाइक व्हाट इज सफर, व्हाट इज देयर टू सफर, एंजॉय व्हाट इज देयर टू एंजॉय, लाइक दैट आई फॉलो. प्रेशर का डेफिनेशन अलग अलग होता है ना. अब मेरे अभी बच्चों के लिए पढ़ाई प्रेशर है ना, तो प्रेशर का डेफिनेशन अलग अलग है. देयर इज नो गेन विदाउट पेन. हाँ, या सर, यस डेफिनेटली. That is the thing. So my friends, pressure will be always there. Work will be always there. You want to take it as a pressure or you want to take it as a pleasure. Option is with you. That's that. Right. Yes, sir. So I guess we have addressed most of the queries of our students. So thanks Swamini, Sonam for this wonderful interaction. Thank you Gavita and Sohail for joining us. Sohail couldn't interact much because of the internet issues. Anyways, your questions I have addressed, Sohail, and you can listen to them. I'm sure this will help our students a lot, right? And I wish Swamini and Sonam will keep on guiding the aspirants on these aspects later on in the future also. Sure, Thank you, sir, for giving us this opportunity and for Thanks a lot, ma'am. Sessions. Yeah, and all the very best to all the aspirant pharmacy graduates. Wish you very good luck. Thank you so good much. luck for all the aspirants. Thank you so much. Thank you, ma'am. Fine. We can end the meeting now. Thank you. Bye Sonam, bye Swamini, bye Gavita, and bye Sohail. Bye everyone. sir. Bye bye, bye everyone. Bye bye. Bye.